Hello learners, welcome to my channel Craving for Study. Today we will learn prepositions. As we know, there are 8 parts of speech in English grammar and preposition is one of the part of it. What are prepositions? Prepositions are words that express a relationship between a noun or pronoun and another part of a sentence. Prepositions उन शब्दों को कहते हैं जो रिलेशन बताते हैं किसका, नाउन, प्रोनाउन और अनदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस में हमारे नाउन, प्रोनाउन और सेंटेंस के अदर पार्ट से उसका क्या रिलेशन होता है, वो किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, दैट टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड prepositions. So, for example, some of the words are here which are used as prepositions. On, in, by, with, over, under, across. So, prepositions tell us the position of something in relation to another. इस तरह preposition हमारे sentence में किसी भी चीज़ की position को show करते हैं in relation to another, कि वो किस तरीके से दूसरे noun या pronoun से connected है या related है. Let's learn it with the example. A book is on the table. बुक का टेबल से क्या रिलेशन है कि बुक टेबल के ऊपर है. ऑन इज द preposition which show the position of book and the relation of book and table. So what is the preposition in the sentence? On. Now next example is the birds were chirping in the garden. बर्ड्स की पोजीशन क्या है? इन द गार्डन, कि वो गार्डन में हैं. तो बर्ड्स की पोजीशन का हमें पता चल गया इन से कि वो कहाँ पर है, इन द गार्डन, एंड द रिलेशन बिटवीन द बर्ड्स एंड द गार्डन. सो व्हाट इज द preposition इन द सेंटेंस? इन. नाउ लेट्स लर्न सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द preposition. नाउ prepositions कैन शो time, place, direction और position. prepositions हमारे time को show करते हैं, place को, directions को and positions को. Now let's learn with the example. He is in the kitchen. preposition is in. The book is on the table. What is the preposition? On. So these both the preposition show the position or place of the noun or a pronoun. Now let's learn the preposition of place. These are called the beginner prepositions also. The green ball is. Now you have to tell the position of green ball, means the place of a green ball. Where is? In the first picture the ball is in the box. इसमें बॉल बॉक्स के अंदर है, सो वी यूज इन. नाउ द बॉल इज ऑन द बॉक्स. बॉल बॉक्स के ऊपर रखी है. नेक्स्ट द बॉल इज अंडर द बॉक्स. बॉल बॉक्स के नीचे रखी है. नेक्स्ट द बॉल इज नियर और नेक्स्ट टू द बॉक्स. इसमें बॉल बॉक्स के पास रखी हुई है, तो हम नियर या फिर नेक्स्ट टू preposition का यूज करेंगे. द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स. बॉल बॉक्स के पीछे रखी हुई है, सो वी यूज बिहाइंड. नाउ इन दिस पिक्चर द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस. बॉल दो बॉक्सेस के बीच में रखी हुई है, तो बीच के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन. इन दिस पिक्चर द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. बॉल बॉक्स के आगे रखी हुई है. नाउ लेट्स लर्न वेयर वी यूज द बिटवीन preposition and among preposition. In the first picture you can see there are two boxes and ball is in the between the boxes, so we use between. The ball is between the boxes. बॉल बॉक्सेस के बीच में है. सो जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ रखी होती है, when there are two objects and one thing is in mid,
of two objects, then we use between. Okay. Now the next is among. जब कोई चीज दो से ज़्यादा लोगों के बीच में रखी होती है या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, देन वी यूज़ अमंग. मीन्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस. बॉल दो से ज़्यादा बॉक्सेस के यानी कि बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में रखी हुई है. देन वी यूज़ अमंग. सो व्हेन one thing is between two things, two objects, then between. When one thing is between more than two objects, then we use among. Now let's learn in and into. In is used when something is in static position or inside the object. The ball is in the box. In this picture, the ball is inside the box and it is in static position. स्थिर position में है. So we use in. Next, into. We use into preposition when something is going into the box. Something is going into the object. Means when the thing is in moving position. Moving situation होगी, then we use into. For example, the ball is going into the box. Ball box के अंदर जा रही है. Means वो moving position है. Then we use into. Static position in, moving position into. Next preposition, through. The preposition is used for the closed space. Means when something is moving from the closed space. For example, the star shines through the box. Means box के closed space में से star shine कर रहा है. Then we use through. Let's learn the another example of through. The train goes through the underpass. In this picture you can see the train goes through the underpass. Means there is a closed space above and then the train goes underneath of that underpass. So we use through there. Let's understand with the next example. The bird flew through the open window. Bird open window में से होकर उड़कर चली गई. Next preposition, along. When we use the along preposition, we use along preposition when we are moving in a line next to something. As she is cycling along the road. So in this picture the girl follow the side of the road. Means वो road की एक side को continue same for long follow कर रही है. Means along is used for a direction or a line that you follow for long. Let's see with the next example. In this picture you can see two persons walked along the beach. Means we walked along the beach. हम beach के side को follow कर रहे हैं. So we can say this sentence like we walked along the beach. So we understand how to use the along preposition. Means when you are follow the direction or a line of a something for long, then we use along. Let's see next example. House is built along the river. River की line को follow करते हुए houses को बनाया गया. Next preposition, across. The cross is used when you are moving from one side to another. Means you are crossing from one side to the another side. Kids walked across the road. बच्चे एक साइड से दूसरी साइड पर वॉक कर रहे हैं रोड के. Now let's learn with the next example. A car is moving across the river. In this picture you can see the car moving from one side to the another side of the river. Means वो उसको cross कर रही है. Then we use across preposition. Now
How we confused in through and across. Through is used to show the direction from one side to another in a closed space, in a closed area. जब ऊपर से एरिया क्लोज्ड होगा उसके बीच में से चीज निकल कर जा रही है, then we use through. As you can see, the train is moving from one side to the another of an underpass. Underpass is closed from the upward, so we use through. And now, when we use across, when the space is open from the upward, ऊपर से space open होगा and then you are moving from one side to another, then we used across. Means in both the preposition we are crossing from one side to another, but when the space is closed, then you use through. When the space is open, then you use across. Now the next preposition, the difference between over and above. Over and above, both prepositions are used to indicate the higher position. You can see over and above, दोनों ही preposition का यूज ऊपर की चीज़ों के लिए किया जाता है, जो चीज़ें ऊपर हैं किसी चीज़ से. But when we use over is used for movement of action. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से movement करते हुए निकलती है, then we use over. As you can see in the first example, the bird is flying over the tree. Bird is flying. वो moving position में है. So over is used for movement of action. Next, above. It is also used for higher position. ये भी ऊपर की चीज़ों के लिए यूज हो रहा है, but it is used for static object. यानी कि when the object is in static means not moving position, स्थिर है, static है, then we used above. The ball is above the box. वो मूविंग पोजीशन में नहीं है, स्टैटिक है, देन वी यूज अबव, और मूविंग पोजीशन में है, देन वी यूज ओवर. सो वी हैव लर्न prepositions एंड uses of prepositions. Like, share and subscribe my channel for more educational videos. Thank you learners. @ craving for study.